गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर दोस्तों। मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आज मैं आपको जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो चैप्टर समझाने वाला हूँ, दैट कम्स फ्रॉम साइकोलॉजी चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 11 सॉरी। एंड इस पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज अकोमोडेशन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड ऑडिटरी सिस्टम। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें समझाया गया है एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, उसके पार्ट्स एंड एक ईयर के भी सेम थिंग्स। अब इन पार्ट्स के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज अ लेंस एंड द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन द लेंस। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको पता चल गया होगा कि लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट इज टू चेंबर्स, दैट इज द aqueous chamber and the vitreous chamber. Aqueous chamber lies between the cornea and the lens. The vitreous chamber lies between the lens and the retina. तो कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, ये तीन पार्ट्स होते हैं। इनके बीच के दो चेंबर्स होते हैं, दे आर सब्सिक्वेंटली सेड aqueous chamber and vitreous chamber. Aqueous chamber, as it sounds, is filled with aqua, that is water. It helps in maintaining the fluidity of a human eye, and the vitreous chamber is filled with a jelly-like structure that helps in maintaining the structure of a human eye. So these both chambers are very much important. They work on basic principles. एक आँखों को नमी प्रदान करता है और एक आँखों का structure maintain करके रखता है so that they don't shrink, they don't diffuse out. अक्सर हमने देखा है some blind people and all, their eyes seems to be shrinked. So it is the chambers that have gone wrong. अब ये जो process होता है, ये fluids का basic जो process है of keeping an eye into the shape and keeping it well, like processed with liquid and water and all stuff, this is known as accommodation. So accommodation basically, अगर हम bookish language में देखें तो it is a process through which the lens changes its shape to focus on objects at varying distances. अब ये जो human lens होता है, अगर हम बात करें कॉर्निया और रेटिना के बीच में दो चेंबर्स होते हैं। इनमें लेंस, ये लेंस को डिवाइड करते हैं, एक तरफ लेंस के एक्वा चेंबर, एक तरफ आता है विट्रस चेंबर। ये चेंबर्स जो होते हैं दे एक्चुअली हेल्प द लेंस टू मूव अहेड और गो बैक टू एडजस्ट ऑन डिस्टेंस थिंग्स। Complicated है थोड़ा, but yes, it's quite easy if we understand it. So as I have said, the lens is basically maintained by these two chambers. They actually keep the fluids, the jelly and the liquid in there, the water, and they maintain the process of moving the lens to see the far thing or to the nearest thing to us. So this process is known as accommodation. Now this process is maintained by some special muscles in the eye. These are not the muscles that we find in our biceps, triceps or thighs, These are the muscles that are very tiny modules and are maintained by the part called ciliary. So these are ciliary muscles. They actually go ahead and work on the principle of moving the eye through the chambers, through the pressure exerted by the various chambers. So this is how the complicated process works. So now we have understood that there are two chambers in a human eye, and then there is a lens. This lens works on the process of accommodation. So accommodation is a process that is maintained by ciliary muscles. It helps a person to focus on distant object or nearer object. And finally, the process actually that takes place is, जो process होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब दूर का कोई सा ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारी लेंस फ्लैट हो जाती है, एंड जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखने जाते हैं सो आवर लेंस एक्चुअली बेंड्स. सो दिस बेसिकली लुक्स इट थिकन्स आउट देयर. तो हमारी लेंस एकदम थिक हो जाती है एंड फ्लैट हो जाती है, just like a concave lens and a convex lens. So exactly in the same manner it happens over here, that these muscles, they go ahead and work on the principle of maintaining the chambers and maintaining the lenses and all things. So I hope now you have gotten understood what is the process of accommodation. Still, this is not a biology topic. It comes under psychology, because to understand certain psychological aspects of a human being, we need to go ahead and have a basic knowledge of the structure
In the further classes, you'll be studying in-depth knowledge. So the basics right now needs to be cleared. Still, if you have any doubts, my friends, so you can contact me, you can comment down below. We will be going ahead and working upon the process of, getting you rid of your problems. So please, channel को subscribe करिए, video को like करेगा. Thank you very much.